not work in life. You should work on life. People, those who work on life, they don't have to work in life. And people, those who don't work on life, they work in life. So when you work in life, your life becomes struggle. Your life becomes pain. Your life becomes misery. And people who work on life, their life becomes a gift to them. So all of you, those who are sitting in this room and they want to make something beautiful out of this, they must remember that they don't have to work in life. But if they want that they should not work in life, then it's very important for them to work on life. And when I say work on life, what am I trying to say? When I say work on life, so what exactly I'm trying to say? When I say work on life, it means I'm saying work on yourself because you're life. Yes or no? Everybody sitting in this room is a life. You're an evolving process. What is the difference in humans and animals? What difference do you find in a human and animal? Animal is actual. When you see a dog, you know that when he grows up, he's going to be dog. When you see a lion, you know that when he grows up, he's going to be a lion. And when you see donkey, you know that this is going to be donkey. But when you were small, nobody knew what you could be. So the difference in human and animal is animals are actual and human is potential. Animals are actual and human is potential. He may become something, he may not become something. So when we say that he's a potential and we want him to reach that potential, then it becomes very important for him to understand himself. And when I say he has to understand himself, it means he has to understand his life. And when I say he has to understand life, I'm saying he has to understand his whole personality. All of you are blessed that you're born in one of the most beautiful nation, India. A country which is full of knowledge, country which is full of wisdom. If anybody knows what life is, majority of experiments are done in this nation only. If anybody knows what God is, all experiments are done in this nation only. So you are blessed. But unfortunately, we are blessed only, we are not taking the advantage of that blessing. So though there is too much of knowledge, but people don't get access to that knowledge and they don't utilize that knowledge for the well-being of themselves. So everything which I'll teach you today is going to be of great importance. When you will listen, it will really fascinate you. You'll feel happy about it. You'll feel that, yes, I came to know something about my life. But it won't bring any kind of much change in your life. If you want to bring change, then you have to go home, recapitulate everything which I'll be teaching you, then make few notes, and then decide to bring some changes in your lifestyle. Decide to bring changes in yourself. And the moment you start bringing those changes and implement every information which I'll be sharing with you right now, transformation can happen with you. What can happen? What is the difference in change and transformation? Do you want to change in your life or you want to transform in your life? So what is the difference in change and transformation? Change is a reversible process. Like you change, again you can come back. But once you transform, you won't be back now. So it's irreversible process. Transformation is a irreversible process and change is a reversible process. थोड़ी देर के लिए आप अच्छा महसूस करेंगे, वापस अपनी औकात पर आ जाएंगे. तो ये क्या हुआ? Change. लेकिन transformation का मतलब तुम अब बदल चुके हो. So when Buddha became Buddha, he became Buddha. After that, he didn't become Siddhartha now because he was transformed. When Mahavira became Mahavira, he was Mahavira. He didn't become what he was earlier. So when Nanak became Nanak, he was Nanak now. He could not become what he was earlier. Are you understanding my point? So please understand, we'll be talking about a very important issue, life. Understand in case you feel like asking any question. In the end, you may raise questions. And all people who are sitting here, please understand. 3 is very important in your life. What is very important? 3. We have got Brahma, Vishnu, Mahesh. You have got Brahma, Vishnu, Mahesh. Now what is the job and title to Brahma? He has to create something. And what is the job and title to Vishnu? He has to nurture. And what is the job and title to Lord Shiva? He has to destroy. Okay? But these 3 energies called Brahma, Vishnu, Mahesh are masculine energy. And these masculine energies cannot perform by themselves. They require a complementary energy with them. And with them comes a complementary energy of feminine also. So you'll always find that Brahma is with Saraswati and Vishnu is with
Lakshmi, and Shiva is with Shakti. Okay, you know why? Because in order to create, you require knowledge. And who is Saraswati? Goddess of knowledge. All right. And in order to nurture somebody, you require wealth, you require money. And who is Lakshmi? Goddess of wealth. And if you want to destroy something, you require power. And who is Durga or who is Parvati? Shakti. Are you understanding it? So you all people sitting in this room, remember that when you want to grow high in your life, you have to develop these both energies inside you. If you ever see the picture of Lord Shiva, he comes in the form which is called Ardhanarishwar. What do we call it? Ardhanarishwar. It means half men and half women. So we all sitting in this room are basically half men and half women. And if any one part of our energy is not fully nurtured, we won't be able to do much in our life. If you think that you're man and you're man only, no, 50% of you is a woman. And a woman who thinks she's a woman alone, she can do something, no, 50% of a woman is a man. Are you understanding it or not? 3 is very important. So 3 energies which are masculine, they are playing a greater role, and these 3 masculine energies are associated with 3 feminine energies also, and their job is also to assist them. Agree, disagree? So if you see yourself, you yourself are complete universe. You yourself are complete Brahman. That's why your scriptures declared very boldly. Your scriptures declared with a lot of courage. And to declare this, you require guts. Your scripture said, Aham Brahmasmi. What scripture said? Say loudly. One more time. So they declare that I am the Brahman. It means I am the creator. Within you there is Brahma. Within you there is Vishnu. Within you there is Shiva. And within you there is Saraswati. Within you there is Lakshmi. Within you there is Shakti. Are you understanding this point or not? Now let's leave this scene for a few moments and let's move to another scene. There is a beautiful city and a very luxurious city which is made up of gold. And this city is called Lanka. This city is called Lanka. And if you see this Lanka, it's highly prosperous city. All the houses are made up of gold. And the one who is ruling this city called Lanka is very powerful king. And his name is Ravan. What's his name? Ravan. So this Ravan is basically the king of Lanka. And in this Lanka, this Ravan has been given the company of a powerful brother, a very, very powerful brother, and his name is Kumbhakaran. What's his name? So we've got Ravan, we have got Kumbhakaran. And Kumbhakaran is also equally powerful as Ravan is. And then they have got another brother who is also very powerful, but little different in nature, and his name is Vibhishan. So 3 people are the main people in Lanka. How many are they in number? 3. Lanka mein bhi dekhiye 3 log hain. One is Ravan, second is Kumbhakaran, and third is Vibhishan. Now when we look into the character of these 3 personalities, so let us evaluate and try to draw a character sketch of these people. Ravana is highly ambitious. He is very powerful also. He is daring also. He is winning over one king, another king, another king. And he wants to live a sort of life which is highly protected and full of power. So he captured a city of Kubera. Kubera is his own brother, but is not physically that powerful as powerful Ravana is. So ultimately Ravana snatched the city from Kubera and he himself became the king. So who is Ravan? Ravan is aggression. Who is Ravan? Ravan is a person who has got a lot of ambitions in his life. Ravan is a person who is full of arrogance also. And Ravan is a person who has got a lot of knowledge also. So when we look into the personality of Ravana, we find many qualities in that personality. At the same time, we find 2 drawbacks in his personality. One is lust and second is ego. One is lust and second is ego. So though he has everything with him, because of his ego, because of his lust, he in the end gets sabotaged. Yes or no? So one message which can be received by us from Ravan is, however powerful you are, however knowledgeable you are, if you do not have control over your senses, and the most important, if you do not channelize your ego, you are going to be finished at the end. Like recently you see a man got killed in UP, a famous gangster, right? And if you see his whole life, he has ruled that city. Agree, disagree? Once upon a time he was very powerful and people were scared of him.
Okay, but what finished him? His arrogance. His arrogance. Please understand, when a person becomes a criminal and he becomes a top class criminal means when I say a person of Atiq Ahmed level or Daud Ibrahim level, and also they are not ordinary people, they are also extraordinary. But the problem is they could not channelize their energy in the proper way. They just got their energy into a negative way and they go on the wrong path. But in the end, they get destroyed. Agree, disagree? So Ravan is somewhat like that. When we see Kumbhakaran, so about Kumbhakaran, you all know that most of the time he sleeps. And the moment he wakes up, the only thing which he does is he eats. Okay, so second energy is Kumbhakarna in Lanka. Most of the time he is sleeping, and when he wakes up, he spends his time in eating only. And then there is third energy. His name is Vibhishan. He's after divinity. He worships Lord Vishnu, and he wants to meet Rama. And he doesn't do anything which is unethical. He follows dharma and does everything which is in alignment with dharma. Yes or no? And they all are living in which country or city? Let's give it a name, city in Lanka. As long as these three people are together in Lanka, everything is happening fine in Lanka. But story goes like this, that at one point in time, Vibhishan leaves Lanka and after that Lanka gets destroyed. यहाँ तक बात समझ आता है आपको? So let's say ये तीन कैरेक्टर हैं, ये तीनों कैरेक्टर कहाँ पर रहते हैं? लंका में. एक रावण है, ये क्या है? एम्बिशियस है. ओके, एक कुंभकर्ण है, ये क्या है? पावरफुल है लेकिन सोया रहता है और खाता बहुत है. और विभीषण है, ज्ञानी है लेकिन साथ के साथ इसका जो ज्ञान है वो डिविनिटी की तरफ है. He doesn't do anything which is unethical. Did you understand this? So these are three people. Now come this side. Now look at yourself. All of us who are sitting in this room, and we all are humans, and as I said, we are potential, and I said that you have to work on your life, and I said when I say you work on life, it means you have to work on yourself. So I have to understand myself, and if I don't understand myself, I won't understand how to work on myself. So when we say I have to develop my personality, question comes, do you understand what personality is? If you don't understand what personality is, you won't be able to develop also. So personality doesn't mean how to look good, what sort of dresses are to be worn, how to sit and how to walk and how to... You have got multiple dimensions of yours. And if you want to bring a humongous change in yourself, then you have to go into the deeper dimension. So when you have to go into the deeper dimension, you have to understand that you are made up of three energies. How many energies? Three energies. All of us who are sitting in this room have got three energies inside us. On top we keep an energy called S. It stands for Satvik energy. Which energy? Okay, all of us have got this energy inside us and we call this energy as a Satvik energy. And then we have got another energy which is called Rajsik energy. And then we have got another energy which is called Tamsik energy. Okay, so how many energies are there? One is called, second is called, third is called Tamsik. Where have we kept Satvik energy? On the top of a triangle, and Rajsik and Tamsik are kept on the bottom. And somebody is there who has created us. Somebody is there who has created us. So let's give it a name G. Let's give it a name G. We call him God. We call him God. कोई है जिसने हमको बनाया और हम अपनी समझ से उसको कोई भगवान बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई क्राइस्ट बोलता है, whatever name. So this is an energy which has created. तो कितनी energies है हमारे अंदर? Three energies. चौथा तो बनाने वाला, उसको छोड़ देते हैं. हम जो बने तो हम कितनी ऊर्जाओं से बने? सात्विक, राजसिक and तामसिक. Now according to the domination of these energy, our personality will be. So if there is any kind of drawback which I find in my personality, I have to go into the depth and see that which content of these three energies is higher in me or is not balanced in me. And if I want to have a dynamic personality and want to live a peaceful, happy, prosperous life, so I need to do something by which I can create a proper balance in these three energies. उसके लिए मुझे देखना पड़ता है कि मेरे भीतर कौन सा कंटेंट ज्यादा है, कौन सा कंटेंट कम है और उसको मुझे बैलेंस कैसे करना है. तो यहाँ तक तुमको समझ आया? ओके, चलिए अब इन एनर्जीज को समझने के लिए लंका में वापस जाते हैं और देखते हैं रावण कैसा व्यक्ति है. बहुत एम्बिशियस है, दौड़ रहा है. From the childhood, if you see his story, he is working hard, fighting hard, ruling, winning, learning, and becoming powerful and powerful and powerful. Ravana is highly Rajsik in nature. Ravana is highly Rajsik in nature. That means
Rajsik energy is that energy which makes you ambitious. Rajsik energy is that energy which says you, come on, wait up, beta, wake up. Rajsik energy is that energy which says have goal in your life. Rajsik energy is that energy which says achieve something. Rajsik energy is that energy which says that do something big in your life. All the industrialists, all the top class politicians, all the bureaucrats, all the people who do big in their life, they have got a pretty good amount of Rajsik energy in them. That means they have got Rajsik content higher. So all you sitting here in this room must understand that if you really want to do big in your life, तो तुमको बड़ा बनने के लिए अपने अंदर किस एनर्जी को फाइन बनाना है, that is called राजसिक एनर्जी. अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने गोल को हासिल करूं, मुझमें राजसिक एनर्जी होना चाहिए. I want that I should make more money, मुझमें राजसिक एनर्जी होना चाहिए. I want that I should be running after my ambitions and achieve them. I must have राजसिक एनर्जी inside me. अगर मेरे अंदर राजसिक एनर्जी की कमी होगी तो मैं गोल नहीं बनाऊंगा, मेरा ज्यादा एम्बिशन नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. My life will be a life of mediocre person only. And you all are young people, so young people require a lot of Rajsik energy. When Swami Vivekananda was admired by the whole world, and after delivering his lecture, he came back to India. So many people got inspired by Vivekananda, and they came to Vivekananda and they said, Vivekananda, we also want to learn this meditation and all this. Please teach us. Vivekananda said, don't fool yourself. Don't waste your energy in closing eyes. Come on, go in the playground and play over there. Take 100-meter run every day. Work hard. Make your body stronger. You are energetic. You are full of energy. Use this energy in creating something. So Vivekananda didn't say that become passive, sit and just close your eyes. He said, come on, run, work hard, do exercise, make your body fit, and do something by which you can contribute in the society and produce something and achieve something higher. You know why? Because Vivekananda knew that these are young people, and by default right now the content of Rajsik energy is high in them. At this point of time, if we make this Rajsik energy more energetic, so they'll be able to do big in life. Agree, disagree? So Ravana is Rajsik. Ravana is Rajsik. Iske goal hai, bada banna chahta hai. Now when we look at another character, Kumbhakaran, he sleeps most of the time and eats too much. What sort of energy is Kumbhakaran? Tamsik energy. तामसिक एनर्जी का आदमी सोता है, खाता बहुत है, करता कुछ नहीं. He is a burden on this planet. He is a burden on. इसलिए इसको सुलाए रखा, क्योंकि उठा तो क्या करेगा, खाएगा. तो इससे बेटर इसको सुला दो. तो तामसिक एनर्जी तुमको नीचे खींचती है, तुमको आगे बढ़ने से रोकती है, तुमको लेजी बनाती है, तुमको लेथार्जिक बनाती है. तामसिकता means gravity. Tamsik means inertia. Like let's say I have got this pen in my hand, and if I throw it, so I'll require some Rajsik energy to make it reach somewhere, yes or no? So that energy with which this pen will go is basically a Rajsik energy, but after some time it will fall down. So what happened? Why did it fall down? Because there is friction and there is constant gravity. So that friction and gravity is constantly pulling it. So the moment this constant gravity and this friction is pulling it, a stage will come when this Rajsik energy will be finished by this Tamsik energy and the pen is going to fall down. Are we meeting, guys? I hope it's not very complex. Getting it or not? So Tamsik energy तुमको जीवन में आगे बढ़ने से रोकेगी. So anybody who's sitting in this room and doesn't have a good content of Rajsik energy inside him and is by default nourishing or nurturing himself with the Tamsik energy, he will have a very pathetic life. He won't be able to do big in his life. And very simple symptom I'll tell you, anybody जिसकी दिन की शुरुआत लेट होती है, वो बड़े आराम से समझ ले कि बेटा तू तामसिक है, कुंभकर्ण तेरे भीतर आ गया है और तेरा कुछ होना नहीं अब. फिर तुम चाहे डायलॉग कुछ भी मारो कि शेर तो आखिर देर से ही उठते हैं. Are you understanding it or not? Tamsic energy pulls you down. Then why do we have tamsic energy inside us? We require it because if we don't have tamsic energy, we won't stop and we won't sleep. रात को जब आपको नींद आती है तो किस ऊर्जा की वजह से आती है? तामसिक. लेकिन इसको आपको प्रॉपर वे में यूज करना होता है, इसको चैनलाइज करना होता है. अगर नहीं करोगे तो ये आपको सुलाए रखती है. Okay, now let's move to the third character of Lanka and we look at this man, we call it Vibhishan. Who is Vibhishan? He is Satvik energy. He is Satvik energy.
This man is always interested in the well-being of other people. He doesn't do anything which in fact goes against the ethics and laws of life. He doesn't snatch anything which belongs to anybody else. He is simply remembering the divinity and expressing his gratitude for everything which he has got in his life. Okay, we too have Satvik energy inside us, but how much, that is a question. That is a question. यहाँ तक बात समझ आ रहा? We'll go slowly so that the things can be grasped by you. In between, if any question comes, kindly keep it down in your mind or in notebook, and then you ask me in the end. Asking will help you. So again, I'm saying this thing to you, that do ask in the end so that we can understand how much you understood. तुमको कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया, ये हमको अंत में आपके सवाल से ही पता चलेगा, और सवाल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट? तो तुमको समझ आया कितने कैरेक्टर है लंका में? राजसिक कैरेक्टर भी है, तामसिक भी है और सात्विक भी है। विभीषण कौन है? सात्विक। और कुंभकर्ण कौन है? तामसिक। और रावण कौन है? राजसिक। Okay, we have done a lot of injustice with a beautiful character and a very honest character and a very knowledgeable character, विभीषण। इसके साथ समाज ने बहुत बेइंसाफी की है। बेइंसाफी है कि इस बेचारे के पीछे एक स्लोगन बना दिया, एक मुहावरा बना दिया, घर का भेदी लंका। And most of the people think that इसने गलत किया अपने भाई के साथ। तुमको भी ऐसा लगता है? कईयों को ऐसा लगता है कि यार भाई का तो साथ उसको देना चाहिए था। अगर तुमको कुंभकर्ण और विभीषण दो भाई दिखाई दे तो तुमको कौन सा भाई ज्यादा अच्छा लग रहा है? Kumbhkarna as a brother, Kumbhkarna, okay. Now this is a very, difficult thing to understand, ना कि क्या विभीषण सही था? Now please understand. First I'll tell you a story and then we'll move ahead, because it's very important for you to have the right fundamentals of life. If fundas of life are not very clear, so you live a egoistic life and you think that I am very honest person. आप अहम पर बेस जीवन को जी रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है मैं धर्म का साथ दे रहा हूँ, ठीक है? एक कहानी है, एक शिकारी एक शिकार के पीछे चला हुआ है और वो दौड़ रहा है शिकार उसका आगे, और शिकारी तीर लेके उसके पीछे चला कि मैं इसको मारूंगा। तभी एक जगह आती है जहाँ पे गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे होते हैं, और वो हिरन गौतम बुद्ध के दाईं तरफ से भाग जाता है और पीछे से शिकारी दौड़कर आता है। वो देखता रहे यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, दो रास्ते, एक दाईं तरफ से जा रहा और एक बाईं तरफ से जा रहा। सो ही आस्क्ड गौतम बुद्धा, क्योंकि उसको विश्वास है गौतम बुद्धा इज ऑलवेज टेलिंग द ट्रुथ। सो गौतम बुद्धा से पूछता है कि गौतम बुद्धा मुझे बताएंगे ये हिरन यहाँ से जा रहा था मेरा शिकार, वो कहाँ से गया है? आपने तो देखा होगा। बोला हाँ देखा। बोला कहाँ से गया? तो गौतम बुद्धा की बाईं तरफ से गया था। गौतम बुद्धा ने बोला दाईं तरफ से गया है, और वो दाईं तरफ चला गया। अब जो डिसाइपल्स बैठे थे वो बड़े परेशान हुए, क्योंकि गौतम बुद्धा बोल रहे थे सत्य का हमेशा साथ देना चाहिए, धर्म का हमेशा साथ देना चाहिए, लेकिन तो गौतम बुद्धा ने झूठ बोल दिया। So Gautam Buddha could understand that what disciples are feeling. So he said, now listen very carefully. He said it's very easy to choose between right and wrong. बहुत आसान होता है सही और गलत के बीच में से एक का चुनाव कर लेना, क्योंकि एक चीज तो आपको मालूम ही है कि गलत है और दूसरी क्या है? सही है। So you can easily pick up. मुश्किल तब आती है जब दो सही में से एक का चुनाव करना होता है। इस वक्त दो चीजें मेरे सामने, एक सत्य जो हमेशा बड़ा रहता है और दूसरा इस हिरन का जीवन। मेरे लिए सत्य से ज्यादा बड़ा इस हिरन का जीवन था, तो मैंने उसका चुनाव किया। Are you understanding it or not? Now question comes कि विभीषण ने क्या किया? उसने गलत किया? बिल्कुल गलत नहीं किया। उसने धर्म का चुनाव किया, अपने भाई को छोड़ा। यही क्वेश्चन भीष्म पितामह ने और कर्ण ने कृष्ण से पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों? We have lived an intact life, हमने पूरी जीवन अपने धर्म का पालन किया, और क्या अपने मित्र का साथ देना गलत है? क्या मेरे अपनी जो कसम मैंने खाई उसको निभाना गलत है? क्या मैंने धर्म को नहीं निभाया? ये क्वेश्चन किसका था? भीष्म पितामह और कर्ण का। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि कृष्ण के पास हर सवाल का जवाब होता है। और उन्होंने बोला कि नहीं, गलत तो तुमने किया। गलत तुमने ये किया कि तुमने धर्म का चुनाव नहीं किया, तुमने अपने बनाए हुए धर्म का चुनाव किया। वो असली धर्म नहीं था, वो तुम्हारा बनाया हुआ धर्म था। वो तब तक तो ठीक था जब तक ऊंचे धर्म के चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब दो चीजों में टकराव हो रहा है, एक वो जो मेरा बनाया हुआ धर्म है और एक वो जो वास्तविक धर्म है, तो समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो वास्तविक धर्म का चुनाव करता है। Are you understanding it or not?
मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक बच्चे का रेप कर देता है, उसका फैसला कोर्ट में आता है और जो बैठा जज है वो उसका बाप है, तो उसको किस धर्म का निर्वाहन करना चाहिए कि बेटे को बचाओ या जो असली धर्म है वो? असली धर्म क्या है? उसको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने क्या किया है? गलत किया। यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? सो विभीषण एक बहुत बढ़िया व्यक्ति था, लेकिन हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसका गलत पिक्चरण किया और बोला घर का भेदी लंका ढाए। He didn't do anything wrong. He did what was required to do at that time. He abandoned the so-called social responsibility of him towards his brother, but selected what is called real dharma. Are you understanding it or not? So, Vibhishan kya hai? Satvik hai. Now, please understand. He is Rajsik, he is Tamsik, and he is Satvik. They all are living in a city called Lanka, and Lanka is prospering very well. So in between, an incident happened where Ravan, out of his arrogance and out of his lust, picks up Ma Sita and brings her. So the whole war begins from there, and Vibhishan tries to understand, everybody tries to make him understand, but he doesn't listen. अब देखिए, इसमें एक और सीन पे वापस जाइए. Hanuman comes to find Ma Sita. So when he comes to find Ma Sita, he finds that all houses are made up in one way only, and all are up of gold, and everybody who's sitting over there is a diamond sort of person, but only one home is there, which in fact is having a temple, and in that temple somebody is worshipping Lord Rama. So he wants to see that who this person is. So Hanuman goes over there and meets this person, and then asks few questions. हनुमान बहुत समझदार, इंटेलिजेंट थे, ज्ञाता थे, वो उनको सारे वेद आते थे, शिव का ही अवतार थे. तो उन्होंने विभीषण से पूछा कि ये जो पूरी सारी व्यवस्था तुमको मिली हुई है, ये तुमको किसने दी है? So what was his answer? कि रावण ने दी है. बोला तुम तो पूरा दिन भक्ति में लगे रहते हो, तो तुम्हारे खाने पीने की जो सारी अरेंजमेंट है ये कौन करता है? तो बोला कौन करता है? रावण करता है. तो फिर हनुमान ने उनको बोला कि देखो तुमको चाहिए क्या? He said मुझको राम चाहिए, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ. He said जब तक तुम रावण की दी हुई चीजों पर टिके रहोगे तब तक तुमको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये सब अरेंजमेंट उनकी वजह से हो रही है. तो जो तुम कुछ कर रहे हो उसका फल भी कुछ ना कुछ किसको मिलने वाला है? रावण को मिलने वाला है. हनुमान ये जानते थे कि जब तक विभीषण लंका में रहेंगे रावण मरेगा नहीं. तो लंका को हराने के लिए और रावण को मारने के लिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट विभीषण शुड कम आउट ऑफ इट. तो हनुमान उनके माइंड में एक बीज छोड़कर आते हैं, एक आइडिया छोड़कर आते हैं, और स्टोरी चलती है कि विभीषण जाते हैं रावण को समझाने के लिए, बट रावण आउट ऑफ हिज एरोगेंस डजंट अंडरस्टैंड एंड ही किक्स हिम. वो उनको लात से मारते हैं और बोलते हैं यहाँ से निकल जा वरना मैं तेरा वध कर दूंगा. और अल्टीमेटली क्या होता है? विभीषण लंका को छोड़कर चले जाते हैं. नाउ अंडरस्टैंड हियर वेरी केयरफुली, सिंबॉलिकली अंडरस्टैंड कीजिए. विभीषण लीव्स लंका, इट मींस हु लीव्स लंका? Sattvic energy leaves Lanka, and whenever Sattvic energy leaves Rajsik energy and Tamsik energy, where does Sattvic energy goes? To Ram. That means to God. Are you understanding it or not? तो जब विभीषण ने छोड़ा लंका को तो वो किसके पास गए? भगवान के पास. यानी कि सात्विकता जब इन दोनों को छोड़ती है तो अल्टीमेटली मिलती किसके पास है जाकर? God से. Are you understanding it or not? That means Sattvic energy inside you takes you to your source, takes you to that place from where you have come. तुम जहां से आए हो वहां तुमको ये लेकर जाती है. आर वी मीटिंग दिस और नॉट? नाउ अब हमको ये समझ आ गया कि जैसे ही सात्विकता लंका को छोड़ती है लंका फिनिश हो जाती है. तो इसी तरह अगर हमारे बीच में से सात्विक कंटेंट खत्म हो जाता है तो हमारा भी लाइफ में डिस्ट्रक्शन फॉर श्योर होता है. वी लिव अ poor life, we live a life with no quality, we live a life with no peace, we live a life with no happiness. So if we want to live a dynamic life, it's very important for us to have a sattvic content. यहां तक हमको बातें समझ आई? ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो सात्विक एनर्जी है, राजसिक एनर्जी है, तामसिक एनर्जी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं? हाउ कैन वी डेवलप इट? सो प्लीज अंडरस्टैंड इट. Sattvic energy, we have understood, it's a pure energy which makes you feel energetic, refreshing, positive, dynamic, progressive and not disturbing other people at all. ये डायलॉग बोलिए जरा, हिंदी में बोलिए. जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो भी तेरा है. बोलिए. फिर सब करते हैं. जो तेरा है वो तेरा है, वो मेरा है वो भी तेरा है. ओके, दिस इज सात्विक एनर्जी. दिस इज सात्विक एनर्जी. अच्छा, अगला आते हैं. जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है. दिस इज राजसिक एनर्जी.
कि भाई मेरा मेरा और तेरा तेरा. ओके, जो तेरा है वो भी मेरा है, और जो मेरा है वो तो मेरा ही है. What is Tamsik energy? Are you understanding it? Okay, do you agree? What do you think the people who go early morning to temple and who worship God daily, or those who go to Gurdwara church and this, what sort of people they are? Satvik? They appear to be Satvik, but they are not. They appear to be Satvik. Majority of them are Tamsik by nature. You know why? Because they don't go to meet God there. They go there because somebody has told them कि मंदिर में 41 दिन जाओ तो मनोकामना पूरी हो जाती है. And it is the easiest way. भी अगर 41 दिन जाकर मेरा काम बनता हो तो इससे आसान काम क्या है? Yes or no? You see lot many people go to Babas, and what are their queries? They don't have queries. They simply have a task and they want that there should be some energy, power by which this task can be accomplished. So they are looking for those kind of Babas who can fulfill their desires. So the people who go to temple or go to church, I'm not saying they are not Satvik, but majority of them are Tamsik by nature. Because Tamas बोलती है पढ़ा रहे, करना ना पड़े, अपने आप हो जाए. अपने आप हो जाए, करना ना पड़े. और जीवन क्या बोलता है? करना पड़ेगा. जीवन क्या बोलता है? करना पड़ेगा. बिना किए कुछ हो नहीं सकता. बिना किए कुछ हो नहीं सकता. You have to do. और जब कर रहे हो तो तुमको अपने साथ एक ऊर्जा को लेकर चलना है. वो डिविनिटी है. See, one side Duryodhana is there, one side Arjuna is there. Okay, Duryodhana is snatching the right of Arjuna. Arjuna is saying, give me my right. I'm not asking you to give me yours. And even if you don't want to give me my complete right, give me whatever is mine. Duryodhana says, no, I'll not give. So ultimately Duryodhana accumulates huge army and comes into a battle of Mahabharata, and he has got such sort of army which can never be defeated by anybody. महाभारत में कौरव की सेना वो सेना है जिसको कोई हरा ही नहीं सकता. और दूसरी साइड only 5 people are there. Their name is पांडव. लेकिन फिर भी दुर्योधन हारता है. क्यों? क्योंकि पांडव के साथ कौन खड़ा है? God. So सात्विकता के साथ कौन खड़ा होता है? God. So when he is with you, his presence is with you, and what you are looking for is a noble cause, he will assist you. He will guide you. He will make your power of discrimination clear. He will give you sort of ideas and thoughts by which you will be able to achieve it. But the end of day, action will have to be taken by you only. कर्म तुमको ही करना पड़ेगा, काम तुमको ही करना पड़ेगा. Like you all are coming here to work on your personality and have proficiency. तो तुम मेहनत कर रहे हो ना? Do you think बिना मेहनत के आ जाएगी? कोई ऐसा बाबा है जो तुमको प्रॉमिस करे बेटा मेरे पास आइयो, एक नारियल लेके आइयो, बर्फी का डिब्बा, मैं तेरे को अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा. अगर हो सकता तो ये भी करवा दो यार. फिर काम का काम है, 6 महीने का कोर्स करता फिर. Yes or no? तुमको वो एक प्रोसेस से जाना पड़ता है. You have to learn certain words, you have to work on the grammar, you have to do a lot of reading, you need to watch a lot of English program, and then you got to do a lot of listening also, and then you have to compel yourself to speak. Why you are compelling yourself to speak? Because you have been in a particular behavior and nature for a long time, because of which you have developed a habit of not speaking English. You have a habit of speaking Hindi. Now all of a sudden you give command to your mind that I want to speak proficient English. Now that cannot be acquired if I don't push myself. If I don't push myself. Agree, disagree? Okay? यहाँ तक हमको बात समझ आती है. तब हम देखते हैं कि इसके characteristics क्या होते हैं और ये develop कैसे होती है. ओके, राजसिक एनर्जी हमको दौड़ाती है, तामसिक एनर्जी हमको सुलाती है, और सात्विक एनर्जी हमको पीसफुल स्टेट में लेकर जाती है जहां हमारा पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फाइन होता है, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक बात समझ आ गया? ओके. हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24. सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 24. 8 3 जा 24. यूनिवर्स emits Sattvic, Tamsik and Rajsik energy for a slot of 8 hours each. That means for 8 hours there is Sattvic energy on this planet Earth. For 8 hours there is Rajsik energy on this planet Earth. And for 8 hours there is Tamsik energy. Now listen very carefully. Everything which you will understand is very science. God is science. Okay, God is science and your religion is science. You are born lucky that you are born in such a beautiful religion. ये धर्म विज्ञान है. ये धर्म विश्वास पे नहीं बना हुआ. ये धर्म किस पे बना हुआ है? विज्ञान पे बना हुआ.
When it says chant Om, there is a science behind it. When it says do yoga in the morning, there is a science behind it. When it says sit on the floor and eat food, there is a science behind it. Everything which is given to you as per this religion, all rituals of your marriage, all rituals of your birthday, all rituals of everything, they have got scientific reason behind it. You know, you don't know, that is a different story. But this is science. So understand this religion properly. Follow this science properly, because this science is for the well-being of humanity. This science is for the well-being of humanity. आपका भला इस विज्ञान से ही हो सकता है, otherwise हो नहीं सकता. So 8 into 3, 24, 8 hours पर आपको मिलती है सात्विक एनर्जी, और वो एनर्जी मिलती है मॉर्निंग में. कब मिलती है? मॉर्निंग में. Have you heard the term called Brahm Muhurat? When does Brahm Muhurat start? Okay, Brahm Muhurat starts at 2:30. रात के यानी कि सुबह बोली जाती है वो जो 2:30 बजे होता है, 2:30 बजे के बाद यूनिवर्स जो एनर्जी एमिट करता है वो कौन सी एनर्जी होती है? सात्विक एनर्जी. एंड दिस एनर्जी stays in this universe after almost an hour or 1.5 hours of the sunrise. सूर्य उगने के घंटे 1.5 घंटे तक ये एनर्जी विद्यमान रहती है. That's why you have been advised by the people that kindly wake up before the sunrise. क्यों बोला जाता है कि सूर्योदय से पहले उठो? क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य के भीतर एक हिस्सा कौन सा है? सात्विकता का है. और अगर वो सुबह नहीं उठ रहा है तो धीरे धीरे सात्विक कंटेंट उसके अंदर कम होता चला जाता है और तामसिक कंटेंट बढ़ता चला जाता है. क्योंकि उस समय वो कर क्या रहा है? सो रहा है. इसलिए पहले के लोग अनपढ़ होते थे लेकिन फिर भी अच्छे होते थे दिल के. यानी कि उनके अंदर कौन सा कंटेंट बाय डिफॉल्ट फाइन होता था? सात्विक कंटेंट, क्योंकि सुबह जल्दी उठा करते थे. Are you understanding it or not? So it's almost like this. You want to charge yourself. When you want to charge yourself with the sattvic energy, then it's very important for you to be alive at that time when there is a lot of sattvic energy in the universe. And sattvic energy in the universe is after 2:30 till the sunrise, and after also few hours of sunrise. उस वक्त अगर आप जागे हुए हैं, उस वक्त अगर आप उठकर थोड़ा सा साइलेंस में बैठते हैं, उस वक्त अगर आप उठकर थोड़ा चैंटिंग करते हैं, उस समय उठकर आप थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करते हैं, उस समय उठकर आप कोई एक अच्छी बुक को पढ़ते हैं, the possibility of you becoming more knowledgeable, more composed, more confident, more progressive, more dynamic, more peaceful is very high. सुबह का समय किसी भी ऐसे काम पर दीजिए जो आपको एक complete man बनाए, complete women बनाए. That can be done by chanting also, that can be done by remembering God, that can be done by worshipping Him, that can be done by sitting in silence, or that can be done by reading a good book also. These hours are very important. No, I'm not saying you to wake up at 2:30, that's not possible. I'm not even saying you to wake up at 4 o'clock. I'm not even saying you to wake up at 4:30. But Baba, कम से कम 5 बजे तो उठ जाओ यार. चलो 5 नहीं उठ पा रहे हो, 5:30 तो उठ जाओ, बहुत गर्मी आज. If you want, your benefit. If you want, तुम्हारा फायदा है. Otherwise, a stage will come when your body will not work properly for you. Your mind will not work properly for you. You will be in depression most of the time. Dopamine body release नहीं करेगी. तुमको एक पैकेट चाहिए, उसके बिना बॉडी डोपामिन रिलीज नहीं करती, किक नहीं मिलेगा तुमको. And you will feel I am not motivated. So you will surf internet and then you will find a video of some motivational speaker, उसको सुनोगे, फिर तुमको थोड़ा जोश आए. उसके बिना तुम्हारी जिंदगी चलने वाली नहीं. क्यों? क्योंकि जो कंटेंट तुमको ये देता था उसकी तुम्हारी बॉडी में क्या होना शुरू हो गई है? स्कार्सिटी. Are you understanding it? उसकी कमी हो रही है तुम्हारे शरीर में. और जब कमी हो रही है, तुमको महसूस तो हो रहा है, तो फिर तुम इधर उधर से एक्सटर्नल सोर्सेज को ढूंढते हो. एक्सटर्नल सोर्सेज डू नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. There is something inside you. This beautiful body, this beautiful gadget is very powerful. The only thing is you need to maintain this gadget and utilize a system which has been made for having the best out of this gadget. And that system says, wake up before the sunrise and spend some time with your core, spend some time with your source, and you get connected with that source when you are in silence. When you are in silence, जब आप silence में होते हैं तब आपकी मुलाकात होती है उसके साथ जहां से तुम आए हो. Are we meeting, guys? Yes or no? Now after sunrise and few hours of sunrise, the universe is emitting one energy which is called Rajsik energy. इस समय जो ब्रह्मांड में है सबसे ज्यादा वो कौन सी एनर्जी है? राजसिक एनर्जी. It is a time for you to run after your goal.
It is a time for you to go and meet your clients. It is a time for you to sit in your business house. It is a time for you to work in your company. It is a time for you to run and run and run after your goals and achieve it. ये वो समय है जो आप अपने गोल के लिए दीजिए, अपने बिजनेस के लिए दीजिए, अपने धंधे के लिए दीजिए, अपने लक्ष्य के पीछे भागिए. Because right now यूनिवर्स में भी कौन सा एनर्जी है? Rajsik energy. Okay? And after sunset, universe emits another energy which is called Tamsik energy. ये बोलती है सो जा. ये बोलती है सो जा. Have you ever seen a person waking up early in the morning at 4 o'clock and saying यार एक पैक विस्की पीते? हाँ, एडिक्टेड हो तो अलग स्टोरी है, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद ठेके पे सबसे ज्यादा रौनक होती है. Yes or no? ऑटोमेटिकली आदमी वहां जाता है. ऑटोमेटिकली. व्हाई? बिकॉज यूनिवर्स में क्या है? तामसिक एनर्जी. आपके भीतर भी क्या है? तामसिक एनर्जी. वो तामसिक का कंटेंट हाई हो गया. मैक्सिमम क्राइम्स हैपन एट नाइट. मैक्सिमम क्राइम्स हैपन एट नाइट. जो ज्यादातर क्राइम होते हैं कब होते हैं? रात को होते हैं. यू सी डिस्को बार्स, डिस्को थीक्स फुल ऑफ पीपल. एट व्हाट टाइम? एट नाइट. And if you people have noticed carefully, if you ever go to any bar, knowingly there is a dim light in the bar. कभी जो बार में गया हो, देखो कईयों ने यस बोला. जिसने बार देखा है, गया है, वहां खाया पिया है, तो उसको मालूम होगा बार में कर्टेन्स रहते हैं, बाहर का सीन आपको दिखाई नहीं देता और अंधेरा होता है हल्का. Why? To create the high तामसिक एनर्जी, so that तुम्हारे भीतर और वो भीतर की मुलाकात हो. और फिर so you'll find people who drink, they say घर में मजा नहीं आता है, बाहर में थोड़ा अलग ही मजा आता है. क्यों? क्योंकि घर में तो रोशनी है, 4 बल्ब जगे हुए, मजा ही नहीं आ रहा. Because रोशनी is what? Knowledge. Knowledge means what? Satvikta. And andhakar means what? Ignorance. Ignorance means what? Tamsikta. So when you go into a bar, darkness is over there. Huh? And then slow enigma type music is also being played, which plays with your senses. And then instead of 2 pegs, you take 4 pegs. Yes or no? So this is done knowingly to play with your weaknesses, to play with you. So understand that night is the time for you to rest. It is not a time for you to go here and there, because if you go here and there, there is a possibility of you getting corrupt. There is a possibility of you getting inclined towards doing something which is not good for you. You may end up developing those habits which may be very, disastrous for you. And with no offense to people who drink or people who smoke, ऐसा कहा जाता है कि जो शराब होती है वो 3 जानवर के खून से बनती है. कितने जानवर के? 3 जानवर के. पहला खून होता है शराब में लोमड़ी का. तो ये फाइन कि जब व्यक्ति 1 या 2 या 3 पैक लगाता है तो एकदम शातिर हो जाता है, तोल मोल के बोलता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और मेरा पर्पस क्या, इस बंदे से क्या काम निकालना, वो पूरी उसको समझ होती है. सो इट बिकम्स वेरी क्लेवर. क्योंकि इस समय कौन सा खून है? लोमड़ी. फिर अगले 2-3 पैक लगाता तो अब दूसरा खून एक्ट करना शुरू करता है. दूसरा खून होता है कुत्ते का. और कुत्ता क्या करता है? भांगता है. ये बोलता रहे तेरे भाई की बहुत चलती है, तू टेंशन मत ले, तेरा भाई सब संभाल लेगा, तू फिक्र मत कर, देख लेंगे जो भी आएगा. अब कौन बोल रहा है इसके अंदर? फिर तीसरा खून काम करता है, और तीसरा खून अगले 3-4 पैक के बाद एक्शन में आता है. और ये जो तीसरा खून होता है ये सुअर का होता है. किसका होता है? अब ये तुमको नाली में पड़ा मिलेगा. So no offense to people who drink, okay, but something which in fact is not good for you, you must have the discipline to abstain yourself from it. And if you don't have, develop it. If you don't have, develop it. You must train yourself to say no to all these things, because by this you are increasing the tamsic content inside you. And if you increase the tamsic content inside you, the quality of your life becomes low. And with no offense to people who smoke, please understand what is cigarette. Let's say this is a cigarette, okay? So what is cigarette? Cigarette is basically a tobacco wrapped in a piece of paper. Cigarette is a tobacco wrapped in a piece of paper, जिसके एक तरफ आग लगी होती है और एक तरफ बेवकूफ लगा होता है.
और पी क्या रहा होता है? धुआं। पी क्या रहा होता है? धुआं। और बोलता है विद सिगरेट इन माई हैंड आई फील लाइक अ मैन। अब इस हरामी को मैन फील करने के लिए भी सिगरेट चाहिए, उसके बिना उसको महसूस ही नहीं होता है कि मैन है। So he says, with cigarette in my hand, I feel like a man. So with no offense to all those who smoke, but understand it. ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर किसको बढ़ा रही हैं? और तामसिक कंटेंट तुमको ऊपर लेकर जाता है या नीचे लेकर जाता है? नीचे लेकर जाएगा. Quality of life will go down. Your quality of thoughts will go down. Your quality of relationship will go down. Your quality of health will go down. Lot many things which will happen with you, they may be very subtle and you may not be very conscious of observing it. But the day you will become conscious, you will repent a lot कि तुमने बहुत कुछ खो दिया सिर्फ किसकी वजह से? तामसिक कंटेंट. तो एक बात हमको और समझ आई कि ब्रह्मांड में 3 hours में split है. 8 hours we get which energy? Satvik, that is morning. During afternoon, which energy we get? Rajsik. And during night, which energy do we have? Only one night is there and few other nights are there where you are advised to wake up. And again I repeat, you belong to a very good culture, and this culture had a practice of something we call waking up at night, keeping vigil, and this was called as jagrans. What they were called as? जागरण. आपके ही कल्चर में ही प्रैक्टिस थी जागरण की. आपको जगा कर रखा जाता था कुछ स्पेशल नाइट्स के ऊपर, और वो स्पेशल नाइट्स होती थी नवरात्रास की, और सबसे बड़ी रात होती है महाशिवरात्रि. Which night? Mahashivratri. So remember, there are 2 words. One is called gravitation. Boliye. One more time. One more time. And then there is another energy which is called levitation. Boliye. Again. Again. So gravitation pulls you down and levitation takes you up. So the night which we are talking about, Mahashivratri or Navratras, these are the nights when energy is moving up. So during these nights, it is advised for people to remain alert at night, so that naturally the flow of energy is taking them higher. And when this natural flow of energy is taking them higher, this content is becoming more in them. Which content? Satvik content. So if you ever see शिवरात्रि के ऊपर लोग पूरी रात जागते हैं, और आपके धर्म ने कुछ ऐसी practices बता दी आपको जिससे आप जागे रहें. So they said Shivratri is the night when you have to worship Lord Shiva, and then there are different muhurat. They say this is first time when you have to do Abhisheka, this is second time when you got to do Abhishek, this is third time you got to do Abhishek, and that Abhishek time is distributed in such a way that you have to keep alert and awake whole night till morning, because they knew कि इस वक्त अगर व्यक्ति जागेगा, वर्टिकल पोजीशन में खड़ा रहेगा, so he'll have lot of physical, mental, emotional and spiritual benefits. Why? Because naturally वो एनर्जी कहाँ को लेकर जा रही है आपको? ऊपर की तरफ. And please understand, we all are basically a part of this nature. So any small incident which happens in this nature, we cannot go unaffected by it. We'll be affected by it. और मनुष्य अगर अपने आप को ध्यान से देखे तो मनुष्य एक उल्टे वृक्ष की तरह होता है. किसकी तरह होता है? जैसे मान लीजिए एक पेड़ लगा हुआ है और मैं चाहता हूं इसको खत्म कर दिया जाए, तो मैं उसको एकदम जड़ के पास से काट दूंगा. यस और नो? कि अब इसकी संभावना ही ना बचे. तो वृक्ष की जड़ें कहाँ होती हैं? नीचे. और अगर तुमको बिल्कुल निस्त नाबूद कि तुम्हारे बचने को कोई चांस ना बचे, तो तुम्हें कहाँ से काटना पड़ेगा? यहाँ से. तुम्हारी जड़ें ऊपर है, तुम्हारी जड़ें ऊपर है. इसलिए गीता बोलती है कि मनुष्य एक उल्टे वृक्ष के समान है. यू डू नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम द डाउन, यू गेट एनर्जी फ्रॉम द अप. So if you ever see a spiritual picture of any saint sitting, so you'll find something is happening in this area. Why something? And if you remember, when you took birth, जब तुम पैदा हुए थे, तो तुम्हारा सबसे सॉफ्ट हिस्सा कौन सा था? ये वाला था. तो तुम्हारी मम्मियाँ खूब सारा तेल रखती थी. Yes or no? ये सबसे सॉफ्ट हिस्सा होता है, क्योंकि यहीं से ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है. Are you understanding it or not? So these nights are important, and if you have not practiced it till now whatever Navratra period come or whatever Shivratri period come, don't think you are a religious person. Understand you are a scientific person. Understand that science is for you. And if you want to get the benefit of that science, during those nights, develop this practice of keeping alive. Now, in order to keep awake, तुमको भूखा रहना पड़ेगा. इसलिए व्रत की कल्चर को दे दिया गया, क्योंकि भैया दिन भर ठूस के खाओगे तो रात को जाग पाओगे. तो उन्होंने साथ में क्या बोला कि उपवास रख लीजिए. क्या बोला? उपवास रखिए. क्योंकि अगर व्रत खाओगे बहुत तो नींद तो आनी है, लेकिन अगर खाओगे नहीं तो नींद अपने आप ही भाग जाती है.
So ये कल्चर साथ में शुरू किया, बिकॉज एनीथिंग विच हैज टू हैपन विल हैपन ओनली व्हेन यू फॉलो एवरी प्रोसेस. जब आप हर स्टेज के हर काम को करोगे तभी अल्टीमेट घटना घटेगी, अदरवाइज घटने वाली नहीं है. So they said, we want these people not to sleep. Now what shall we do? Practice fast. So after fast also, will it be possible for them to awake? No, maybe not. So what shall we do? Let's do Jagran and Kirtan. And let's do Abhishek and all this. चलो इस practice को डालते हैं, क्योंकि आदमी जब कुछ कर रहा होता तो उसको नींद नहीं आती है, लेकिन अगर खाली बैठेगा तो उसको नींद आएगी. And people knew that everybody is not so enlightened that he can close his eyes and do meditation. But people are doers and they enjoy doing something. So give them some rituals, because they'll be busy performing those rituals. And if they are busy performing those rituals, they'll not sleep. And if they don't sleep, automatically whatever benefit that energy has to give them will happen with them. Are you understanding it or not? इस तरह से पूरे rituals को design किया जाता है. Are you getting it? Lot many people say कि क्या रखा इन सब रीति रिवाजों में? बहुत कुछ रखा है, उसी से आनंद है. अगर देखिए, मान लीजिए एक लड़के और लड़की की शादी होती है, सारे रिचुअल हटा दो, बचा क्या? लड़का और लड़की, अब करो तुमने जो करना है. लेकिन पूरा आनंद कहां से आ रहा है? रिचुअल से. सबकी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है. माँ का एक रोल है, बाप का एक रोल है, भाई का एक रोल है, मामा का एक रोल है, चाचा का एक रोल है, सबका एक रोल डाला गया है. Why? To make that occasion successful. So it's not stupidity, it is a science. It is a science. Celebrations are required, it is a science. क्यों celebrate की जाती हैं चीजें? So that people can spare some time out of their busy schedule and come together and have fun. Are you understanding it or not? And please understand, for charm in your life, you don't require money, you require people. Let's say you have got too much of money and you decided to throw a party and you booked a big banquet hall and you did huge arrangement for it and you decorated it nicely. You had a world famous DJ over there and you had orchestra also, and you and your family reached over there and nobody else came. तुम पहुंच गए, पूरी डेकोरेशन है, सारी व्यवस्था कर दी है, तुम हो वहां पे और कोई नहीं आया, तुमको आनंद आएगा? डीजे अभी भी बज रहा है, ऑर्केस्ट्रा वाला अभी भी गाना गा रहा है, खाने वाले ने बहुत बढ़िया खाना बना रखा है, गुलाब अभी भी उतने ही सुंदर है, बलून अभी भी उतने ही अच्छे, लेकिन तुमको अच्छे नहीं लगेंगे. लेकिन जैसे ही भीड़ आती है तुमको आनंद आता है, क्योंकि तुमने सारा किया किस लिए था? आनंद के लिए. और वो आनंद कहां से मिलना था? जब लोग आकर उसको देखते और बोलते, वाह शर्मा जी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है. ये डायलॉग के लिए तुम वेट कर रहे थे, अब ये डायलॉग कौन मारेगा? लोग ही तो मारेंगे. तो तुम्हारे लिए लोग इंपॉर्टेंट है या नहीं है? They are important. And why will they come to you if you don't behave well with them? Why will they come to you if you don't treat them nicely? They'll come to you if you treat them without ego. Are we meeting, guys? Yes or no? बात समझ आ रहा है? तो यहां तक समझ आया तुम लोगों को? Okay? So one source of having more content of Satvik energy, Tamsik energy and Rajsik energy inside us is aligning ourselves with the hours of the day. And in that, most important is we should wake up before the sunrise and spend some time in silence with ourselves. This is clear to you? And at the same time, we should try to sleep at right time at night. It should not be very late at night, because if you sleep very late at night, you won't be able to wake up in the morning. It is a very simple fundamental. There is no rocket science required to understand. अगर मैं रात को 2 बजे सो रहा हूँ तो मैं नहीं उठ पाऊंगा सुबह. ये तुमको समझ होनी चाहिए. तो अगर आप रात को सही समय पे सो जाओगे तो सही समय पर उठ भी जाओगे, and that will ultimately help you in your physical growth also and your mental growth also. Now what are the other source of it? इसके और सोर्स क्या है जिनसे इसको बढ़ाया जा सकता है? सेकेंड सोर्स ऑफ सात्विक एनर्जी, तामसिक एनर्जी एंड राजसिक एनर्जी इज थॉट्स. अगला सोर्स क्या है इसका? जोर से बोलिए, फिर से बोलिए. विचार. और विचार कहां से आते हैं? माइंड में कहां से आते हैं? इंफॉर्मेशन कहां से आती है? वही बेड़ा गर्क हो रहा तुम लोगों का. Please understand, thoughts will come to you when you read something or when you listen something, and then you introspect on it. विचार 3 जगह से आएंगे. जब आपने किसी चीज का अध्ययन किया तो अध्ययन करते हुए विचार पैदा होता है, या उस व्यक्ति ने जो विचार लिखा है वो तुम्हारे पास आता है. Yes or no?
गेटिंग इट और नॉट? जब आपने गीता को पढ़ा या रामायण को पढ़ा या किसी भी बुक को पढ़ा तो उसमें कुछ लिखा, तुमने उसको पढ़ा तो तुम्हारी एक समझ पैदा हुई, वो एक विचार का सोर्स बना। एंड इफ यू लिसन टू समबडी हु इज गुड knowledgeable person, तो वहां से भी तुमको विचार आया. Now you read a book, you listened to a person, you went home and you started thinking about it, and then you started having your own analysis, counter, logics, reasoning, and then also a thought came. आपने उसका लॉजिक किया, उसको समझा, सही था गलत था, क्या ऐसे नहीं हो सकता वैसे नहीं हो सकता, आपने किसी और डायमेंशन से भी उसको देखा, तो उन सब चीजों को करने से भी तुम्हारे भीतर क्या हुआ, विचार पैदा हुआ. तो एक चीज मुझे समझ आती है, that if I want to have these energies inside me, the other source of these energy is thought. So if I want more of Rajsik and if I want more of Satvik thoughts inside me, what sort of stuff shall I read? What sort of stuff shall I watch? It's very, very important. मैं किस तरह के stuff को पढ़ता हूँ, किस तरह के stuff को देखता हूँ, ये मेरे लिए आवश्यक हो जाता है. So choose what you want to read. Choose what you want to see. Do not see or read everything which is available in the market. तय कीजिए कि आपने क्या पढ़ना है. And all people sitting in this room, आप अपने जीवन में कम से कम 2 किताबें तो जरूर पढ़ें. One is Ramayana and second is Gita. One is Ramayana and second is Gita. But because if you read these 2 books, possibility कि तुम्हें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी. They'll give you everything. And these are not religious books. These are the books of life management. These are the books of business management. These are the books of emotional management. These are the books of life. These are the books of death. ये आपको बताती हैं कि जीना कैसे है और ये आपको सिखाती हैं कि मरना कैसे, क्योंकि मरना भी तो है, मरना भी है, और जो ढंग से जी नहीं पाता है वो ढंग से मरता भी नहीं है, और जो ढंग से जिया है वो मरेगा भी ढंग से. Did you see the beautiful death of Abdul Kalam? Beautiful death. He is standing at the podium giving lecture, collapsed. By the time he reached hospital, no more. No pain, no misery, nothing. He went with a smiling face. So we have to learn from this man that he did so many good things in his life, but we never found him disturbed or giving wrong statement or speaking something which is showing that he's a weak person. No, he was strong. He was strong. So he appeared to us as a president of a country. He appeared to us as a scientist, but in the core, he was a sage. He was a sage. अब मॉडर्न समय है, संत तुमको धोती में नहीं मिलने वाला, ये संत ही था जो गया. He was a saint. Are you understanding my point or not? So another source कि अगर मेरे को सात्विक कंटेंट बढ़ाना तो इन किताबों को पढूं. If I want to have Rajsik content, read the biography of the business class people, read the biography of the industrialists जिन्होंने बड़ी-बड़ी चीजें हासिल की, उनको पढ़िए. By reading their philosophies, by reading what they did in their life, which content will go high in you? But अगर तुम split villa देखते हो, big wars देखते हो, तो तुम्हारे अंदर कौन सा कंटेंट आएगा? Unfortunately, people spend most of time on this sort of stuff only. ये बदकिस्मत है कि लोग सबसे ज्यादा गार्बेज को ही देखते हैं. बोलिए गार्बेज इन गार्बेज आउट. One more time. One more time. तुम्हारे भीतर अगर गार्बेज जाएगा तो बाहर भी क्या आएगा? गार्बेज आएगा. So it's very important for you to see कि मेरी जो ये सेंसेस हैं इनके द्वारा भीतर मेरे कुछ भी ऐसा ना जाए जो मेरे लिए गलत है. It's your responsibility. God has taken मजा with you. तुमको बनाकर उसने सारी कमांड तुमको ही दे दी. उसने बोला अब तो अपने आप संभाल. तुमको फ्रीडम है. You have got a banana in front of you and you got a piece of momo this side. Crispy momo with that chili sauce. It's your choice which one you want to eat. God will not come and will say that I'll put this banana in your mouth. He will say pick up. And what will you pick? Momo. God doesn't say anything. He says बेटा देख ले तेरे को पे छोड़ दिया मैंने. तुम हरामी क्या उठाने वाले हो? And then in morning you will have a sensation. Then you will suffer. Yes or no? So it's your choice. God has given you full freedom. Don't think that you have got a kind of life where He is controlling you. No, He is not controlling you. He said, I created. And now you are a co-creator with me. I created and you are a co-creator. तुम बराबर के partner हो. It's your life. Not decide what to do and what not to do. For that you have got something called intellect. उसके लिए आपको क्या दिया गया? इंटेलेक्ट, बुद्धि दी गई. बुद्धि का काम है तय करना.
कि क्या मुझको लेना है और क्या नहीं लेना है। लेकिन बुद्धि क्या करेगी, जब उसमें तामसिक कंटेंट ज्यादा है तो वो वही फैसला ले पाती है। तामसिक कंटेंट है तो वो क्या फैसला लेगा, मोमो खाऊंगा, केले को उठाएगा ही नहीं। शाम को उसको बोलो दूध का गिलास लेगा, नहीं, चिल्ड बियर, चिल्ड बियर, दूध नहीं। यस और नो? सो प्लीज बी केयरफुल। अगला सोर्स क्या है इस कंटेंट का? लास्ट सोर्स इज फूड। लास्ट सोर्स इज food, what you eat. So if you are eating more of vegetables, or if you are eating more of fruits, or if you are eating more of homemade food, or food which is cooked with love, that means sattvic content is going very high inside you. So if you are eating something which is made by your mother or made by your wife, provided she is in good mood, provided she is in good mood, so you're eating a sattvic food. Do an experiment. Just go your home and make your mother happy or make your wife happy, and then let her cook food. And see that happiness when she is cooking food, and then eat that food very consciously and observe what is happening inside you. You will find that food will be easily digested by you. Now do another experiment. Go to the market and go to this fast food kiosk, and there you order that make Singapore chowmein, and see there is huge rush. So from this side one order is coming, from this side one order is coming. The Nepali boy who's making it easy in hurry, and he's bloody abusing sala bhi ek pura hua nahi dusra aa gaya, and garma garam aaya aur tumne bhi फटाफट खा लिया. And then observe carefully what happens inside you. You'll find it is difficult to digest. It is difficult to digest. So in your country you had a culture कि जब तुमने भोजन बनाया तो तुम खाओ, उससे पहले उसकी एनर्जी को बदल दो. तो उस एनर्जी को बदलने के लिए तुमको बोला कि एक टुकड़ा गाय के लिए रख लो, एक कुत्ते के लिए रख लो और एक गाय को रख लो. तो जब तुमने किया तो क्या किया, सात्विक भाव हो गया ना, दे दिया. और देना क्या है, सात्विक. यस और नो? और लेना राजसिकता भी हो सकती है और तामसिकता भी हो सकती है. कुछ लोग देते ही नहीं है और कुछ लोग लेने में बड़ा आनंदित महसूस करते हैं. एक बार एक लाला जी थे, नाव में बैठ के जा रहे थे, साथ में उनके और भी कुछ लोग बैठे थे. अचानक थोड़ा लाला जी का वेट ज्यादा था, नाव थोड़ी सी टेढ़ी हुई और लाला जी पानी में गिर गए. तो उनके जो दूसरे मित्र बैठे थे, दो मित्र बैठे थे, एक मित्र ने हाथ दिया, बोला लाला जी 2 हाथ दो, डूब जाओगे. लाला जी हाथ ही ना दे. उन्होंने फिर बोला लाला जी हाथ दो, लाला जी हाथ ना दे. साथ में दूसरा मित्र बैठा था, बोला भैया इसका नाम लाला है, इसने जीवन में कभी दिया नहीं है, लिया ही है, इसको बोलो हाथ लो. फिर आदमी ने बोला लाला जी हाथ लो, तो लाला जी ने हाथ ले लिया. So people have got such a miserable life that they never give in their life, they only take in their life. वो सिर्फ लेते हैं, देते नहीं है. Are you understanding my point or not? So you have this culture कि उसको दे दो. और उसका एक और practice थी, before you eat offer it to God. Before you eat offer it to God. आप खाओ उससे पहले इसको किसको अर्पित कर दो, गॉड को. बिकॉज द मोमेंट यू हैव ऑफर्ड इट टू गॉड इट हैज बिकम प्रसाद. तुमको लगा ये आडंबर है, साइंस है इसके पीछे. देयर इज अ होल साइंस. तुम खाने बैठे हो, खाने से पहले तुमने 3 टुकड़े निकाल के रख दिए. किसके लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए. और इनका भी रीजन होता है. गाय में क्या है तुम्हारे पूर्वज जानते थे. कुत्ता कौन सी एनर्जी है उनको बहुत अच्छे से मालूम है, और कौवा कौन सी एनर्जी है वो अच्छे से समझते हैं. तुमको नहीं मालूम, ये अलग बात है. Are you understanding this point or not? So second source of having this energy is food. And Rajsik is which is full in gravy, rajma, chili paneer. This is Rajsik food. And when you eat a lot of non-veg or you eat stale food or if you eat fast food, you drink, you smoke, this is Tamsik food. ये आपका Tamsik food होता है. So the kind of food you will take, that sort of energy will be more inside you. इसलिए बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन. Repeat it. Repeat it. So it's very important for you all people to decide what sort of life you want to have. And if you want to have a good life, in that you have to have more of sattvic content. And for that you have to work a lot with your food. उसके लिए आपको अपने भोजन पर बहुत काम करना पड़े. Develop this habit of making food at home and eating at home. खाना घर पर बनाने की आदत डालिए और घर पर ही खाइए. This will help you out. Okay? Very soon culture is going to come. जहाँ हो सकता है घर से किचन ही हटा दीजिए. And you have to go in the market only to eat. You ever see Saturday, Sundays, market is full. And what areas are full? Wherever there are eating outlets. They are packed to capacity. Are you getting it or not? अब अगले हिस्से में आते हैं. यहाँ तक बात समझ आया?
Any question you would like to ask till this? कुछ पूछना चाहते हो यहाँ तक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. Till this you want to ask, you may ask me. अभी ये जो कुछ आपने पढ़ा है यहाँ तक, अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, तो आप पूछे. I'll help you out, फिर मैं आगे मूव करूंगा. You have understood that when we want to do something, we require combination of two energy. One is called masculine energy and second is called feminine energy. ये concept तुमको समझ आया कि जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दोनों की जरूरत है. और तुम्हारा धर्म भी तुमको ये सिखाता है, क्योंकि ब्रह्मा अकेले नहीं है, साथ में कौन है? विष्णु अकेले नहीं है, साथ में कौन है? शिव अकेले नहीं है, साथ में कौन है? शक्ति. That means the role of a men and women is very very important, and I would say that the role of women is more important. विष्णु कितना भी चाहे कि मैं अच्छे से पालन पोषण करूं, बिना लक्ष्मी के कर पाएंगे? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? और शिव में जब तक ई है तब तक शिव है, ई के जाते ही शव हो जाएंगे. और ये ई कौन है? शक्ति है. Are you understanding? It means women is more important. तो तुमको बताया जा रहा है तुम्हारा जो feminine part है वो बहुत important. And all you people sitting here, if there is any home where mother is not happy, if there is any home where wife is not happy, वो घर ठीक से चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये feminine energy होती है. She has to be nurtured well, she has to be kept happy, she has to be kept positive. And if she is not, your home will not prosper, your life will not prosper. Any home, go to any home, do a survey of your society, do a survey of relatives. Any home in which you find a peaceful lady, any home in which you find a happy woman, that family will grow. Any home in which you find a knowledgeable man but not a happy woman, that family is not growing. Women is very powerful because she creates you. You are a creation of a woman, and creation is always one leg above the creation. Yes or not? The creator is always one leg above the creation. बनाने वाला अपनी रचना से हमेशा क्या रहता है? ऊपर रहता है. And anybody who degrades women, anybody who doesn't respect women, they will suffer in their life. Please understand it. बाप ने तुमको थोड़ा गाली दिया, इतनी जल्दी असर नहीं करेगा, लेकिन अगर माँ के मुंह से तुम्हारे लिए कुछ गलत निकल गया, वो भयंकर असर करेगा. So be careful of it. And all who are sitting here, when you bring your children up, especially when you bring your daughters up, bring them up in a very nice way. Make them strong. Tell them that what they are. When a daughter is born in any family, she is not merely a daughter, a mother is born. आपके घर में जब लड़की जन्म लेती है तो लड़की जन्म नहीं लेती है, एक माँ जन्म लेती है, क्योंकि यही आगे चलकर क्या बनने वाली है? माँ. And if she is not strong, if she is not morally high, if she doesn't have that sort of faith and confidence on herself, she won't be able to give birth to that sort of powerful generation. If you want that women should be able to give birth to powerful generation, they need to be powerful. लेकिन हमको थोड़ा सा एक misunderstanding रहा. We think that women are equal to men and they should be treated the way men are treated. No, men is different, women is different. Women has to be treated differently, men has to be treated differently. You can't treat them both in the same way because both are different. And you have to understand that difference. That difference is not bad, that difference is beauty. See, normal. If a man comes home from a job, so women is waiting and she wants to tell everything which has happened at home to the husband. So she'll say, तुमको मालूम है आज क्या हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया. अब समझदार आदमी होगा तो चुपचाप सुनेगा, और नहीं भी सुन रहा है तो प्रिटेंड करेगा कि सुन रहा. Why? Because women is interested in telling. ये उसका स्वभाव है. लेकिन मर्द का स्वभाव ये नहीं होता, वो बताने में इंटरेस्टेड नहीं होता. So if a man comes home and he is upset and wife asks क्या हुआ, तो husband कहेगा कुछ नहीं. क्या बोलेगा? कुछ नहीं. And women is intelligent, तो वो पूछना बंद कर देगी. उसको मालूम है अभी ये नहीं बताएगा, अपने आप ही कुछ देर बाद बताने वाला है. लेकिन अगर समझदार नहीं होगी तो बोले क्या बात है, आप बता ही नहीं और मुझे बताओ ना, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते. आदमी को गुस्सा आएगा, बोल तो दिया कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ तो हुआ, तो मुझे बताते नहीं हो, तो मुझे नालायक समझ रहे हो. अब वो क्या हो गया, पूरा डिस्प्यूट हो गया, because she is not understanding he is a man and he is not understanding that she is a woman. You need to understand this. They are different. Boys do not behave the way girls behave and they should not behave that way. Girls do not behave the way boy behaves and they should not behave that way. It's okay.
It's okay for a girl to be a girl. It's okay for a boy to be a boy. Don't try to make a man a woman and women a men. Let them be what they are and respect their differences. Respect their identities. Respect their nature. This is how they have been made. वो ऐसे हैं, आप उसको appreciate कीजिए. If your wife is taking a little more time in dressing up, enjoy it. आराम से wait कर. तू होशियार बनना, तेरे को मालूम है 7 बजे जाने का है और मेरी बीवी 1 घंटा लेगी तैयार होने के लिए, तो उसको बोलो 5:30 का टाइम. तुझको भी प्रॉब्लम नहीं, तेरे को भी प्रॉब्लम नहीं, वो अपने आप ही तैयार हो जाएगी उस टाइम पे, ले जाओ. अब 7 बजे का ही टाइम है और तू बोल भी रहा 7 बजे जाना है, फिर वो 7:30 तो करेगी ना. तेरे को पहले मालूम नहीं था क्या? There is no need of having a dispute. You need to be smart. And she also has to understand कि अगर ये कहीं जा रहा है तो ये वही करेगा जो मैं इसको बोल रही हूँ. तो सारी चीज तरीके से उसको समझाओ. Because if your husband is coming to the market and you say कि आते हुए धनिया ले आना, तो तुम समझ लोगी कि मिर्ची, आम और नींबू तो वैसे ही ले आएगा. नहीं लाएगा, ये धनिया ही लाएगा. तुमको अगर मिर्ची, नींबू और आम भी चाहिए थे तो बोलने चाहिए थे. No, you can't say, अरे ये तो ला ही सकते थे, तुमको दिखे नहीं. वो कहेगा यार बोला तो है नहीं, ले तो आया मैं धनिया. Are you understanding it or not? So you need to understand the psychology of a man. He's like this only. When my son used to come from the school and I used to ask him, और भाई क्या रहा आज स्कूल में? कह रहा कुछ नहीं. पढ़ाई हुई? हाँ हुई. क्या पढ़ाया? कुछ नहीं. अब चला पूरा दिन स्कूल में और कुछ नहीं. That is how he is. And if I ask, I don't have to ask my daughter क्या हुआ, वो बताएगी. फर्स्ट पीरियड में ये हुआ, सेकंड पीरियड में ये हुआ, थर्ड में ये हुआ, फोर्थ में हुआ. एंड बीइंग अ गुड फादर, यू लिसन हर. सुनो उसको बैठकर. शी शुड एंजॉय टेलिंग यू बिकॉज शी इज डीलिंग विद द फर्स्ट मैन ऑफ हर लाइफ. शी इज डीलिंग विद द फर्स्ट मैन ऑफ हर लाइफ. ये पहला आदमी है जो उसके जीवन में या बाप है, लेकिन ये व्यवहार तय करेगा कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या टूटेगा. तो उसको सुनो आराम से. She should feel कि हाँ he is listening to me. चाहे तुम्हारे काम की है, चाहे, and don't expect your son to tell it to you. वो नहीं बताएगा, उससे पूछो भी मत. उसको पूछोगे तो तुम उसको ट्रबल कर रहे हो. Don't try to make him a woman. Let him be a man. He is wild. He is a masculine energy, and daughter is a feminine energy. When you give birth to a daughter, you give birth to a mother. She is to be brought up very nicely. And all men sitting in this room, respect this feminine energy because you are born out of that energy. You are born out of that energy. आप उसी ऊर्जा से बने हैं. तुम्हारे बाप में नहीं था दम कि तुमको 9 महीने रखता पेट में, इसलिए माँ ने रखा. उसको बना ही नहीं वैसा कि वो रख सके. वो चाहे भी ना कि जाके भगवान मैंने रखना है, नहीं रख सकता. वो माँ ही रख सकती है. Getting it or not? So whatever she is, however she is your mother. You don't have any right to judge her on the basis of qualities or the basis of other. No, she is your mother. Respect her, because if she says anything wrong to you, nobody can save you from that curse which your mother gives. Make your mother happy, make your wife happy, make your sister happy. This is your job. You are a producer and women is a nurturer. What did I say? Men is a producer and women is a nurturer. Women nurture करती है हर चीज को, वो पालती है. अगर वो अर्न भी कर रही है तो जिस कंपनी में जा रही है वहां वो नर्चरर है. If she doesn't live there with the mindset of a nurturer and she starts behaving like a producer, उसका लाइफ खराब हो जाएगा. All the women who are working, doing business, they should always remember one thing: they are nurturer. They are good at it. That's why God, the nature gave this, a privilege to her to give birth. This privilege has not been given to a man. Are you understanding my point or not? Did you get it? यहाँ तक बातें तुमको clear हो गया? Any question related to this? Now let's move further. Let's move further. All of us sitting in this room will have combinations of these contents. ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति में सात्विक ही बहुत ज्यादा होगा या किसी में पूरा ही तामसिक होगा, पूरा ही राजसिक होगा. ऐसा नहीं है. You are normal cases. तो इसमें जो combinations रहती हैं वो देखिए क्या क्या रहती है. A person can be sattvic with rajsik. A person can be rajsik with tamsik. A person can be sattvic with tamsik, and a person can be sattvic with sattvic, right? Okay. Or a person can be rajsik with rajsik, and a person can be tamsik and tamsik only. These are the extreme cases. These are the extreme cases. Majority in 3 में रहती है.
So Satvik and Rajsik means what? जो grow भी कर रहा है लेकिन at the same time he is a nice person also. If you see this man called Tata, okay, this company has got very high morals and they have always worked for the well-being of their employees. So people who work in Tata, they know that they are given the kind of facilities which even government people don't have. And this man works with certain ethics. He doesn't run after money. So somebody asked Tata that why you are not the richest man as Ambani's are there. He said he's a businessman, I'm an industrialist. I'm an industrialist. My target is not to be rich. My target is to create a sort of infrastructure by which the life of the people can be fine. किस तरह का combination है ये? Satvik and Rajsik, right? Then there are people who are Rajsik and Tamsik. When we take an example of people like Daud Ibrahim, when we take an example of this man called Atiq Ahmed, ये किस तरह के लोग हैं? यानी कि आगे बढ़ना है, गोल है, चाहिए, खूब सारा चाहिए, लेकिन रास्ता कौन सा है? गलत है. तो ये कौन से हो गए? Rajsik with Tamsik. And third is Satvik भी और Tamsik भी हैं. Now these are the people who enter into spirituality with wrong practices. With wrong practices. So when you talk about all these tantrics and all sort of people who adopt a wrong way of reaching somewhere, इनको हम लोग कौन सा बोलते हैं? Satvik plus Tamsik. Means उस ऊर्जा की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन उन्होंने जो मार्ग पकड़ा है वो कौन सा है? और फिर आता है Satvik and Satvik. Have you heard about Meera? Chaitanya Mahaprabhu? They had only Satvik energy inside them, nothing else. So when this poison bowl was given to Meera, she consumed. Nothing happened to her. When Chaitanya Mahaprabhu wanted to meet Krishna, he started banging his head on the tree and said, I want to meet you. And he got disappeared. He got disappeared. Why? Because a lot of Satvik energy inside. And there are people who are highly Rajsik. Highly Rajsik means ये रुकते ही नहीं है, but they don't do much of any kind of social work also. So जो बड़े-बड़े businessmen होते हैं, those who have a lot of wealth and accumulated too much, they are the people who have got very high Rajsik content. Okay, and then Tamsik content people ये जो भीख मांगते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पड़े हुए हैं. शरीर अच्छा है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना. अगर मिल गया खाने को तो ठीक है, नहीं तो पड़े हुए हैं. So these are called Tamsik people. Now, for you, जो आप चाहें, okay, but आपके लिए सबसे बढ़िया कौन सा है? Satvik and Rajsik. So you will become contribution to the society. You will become contribution to the family. आप समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक योग्य व्यक्ति बन जाएंगे. आपका एक रोल रहेगा उसमें. And not only your life will become good, around you the system or the ecosystem of yours will also be very good. आपके जो आसपास का environment होगा वो भी बहुत dynamic होगा. You will be loved by the people. You will be loved by the company you will be working. You will be loved by the society where you will be living. You will be loved by your family members. Because तुम्हारी philosophy लेना नहीं है, तुम्हारी philosophy produce करना भी है और देना भी है. Are you understanding it or not? एक व्यक्ति produce कर रहा है फिर distribute कर रहा है, produce कर रहा है फिर distribute कर रहा है. तो produce में बिना पैसे के तो तुम दे नहीं सकते. And always remember guys, money may not do much for you, but money can do a lot through you. बोलिए एक बार इसको. Repeat it. Money may not do much for me, but money can do a lot through me. फिर से बोलिए, money may not do much for me, but money can do a lot through me. That हो सकता है पैसा आपके जीवन में बहुत ज्यादा कुछ ना कर पाए, लेकिन पैसे के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हो. Are you getting it or not? So it's very important for you not to hate money and feel कि पैसा तो माया है, इसके पीछे क्यों भागना. अरे कमाओ इसको. जब कमा लो तब बोल देना नहीं भागना इसके पीछे, बट पहले कमाओ तो सही. पहले दौलत तो तुम कमा के तो दिखाओ. कमाया तुमने है नहीं, किसी से सुन लिया और फिर उसको रटना शुरू कर दिया. पैसा तो सब मोह माया है, मुझको तो जीवन में शांति चाहिए. शांति चाहिए नहीं तो भाग रहा है. तू कमा नहीं पा रहा है, तेरे को सुबह उठा नहीं जाता है, तेरे से गोल बनाया नहीं जाता, तेरे से अपने ऊपर स्किल्स पे काम किया नहीं जाता, झूठ बोलता था. शादी क्यों की थी तूने? कमा नहीं सकता था तो. और तेरी बीवी को तो चाहिए बढ़िया वाली साड़ी ला के दे इसको. क्यों शादी की थी? उसको तो सजने का शौक है. वो तो आई थी, सजना है मुझे सजना के लिए. अब सजना साला साड़ी नहीं ला के दे रहा, सजेगी कैसे हो? ये तुम उसको समझा रहे हो, देख कुछ नहीं रखा इसमें, सब मोह माया. अरे भूतनी के शादी क्यों की थी?
Are you understanding what I'm trying to say? Money may not do much for you, but it can do a lot through you. It can do a lot through you. आपके द्वारा ये बहुत कुछ कर सकती है. So if you make a goal and if you are learning, studying, you have guts to make money, earn it. What is the problem? देखिए काम करके आदमी नहीं थकता है. आप थकोगे खाली रहकर. Have you ever noticed when you are busy, you don't come to know when time flies? जब आप व्यस्त होते हैं आपको पता भी नहीं चलता समय कहाँ बीत गया, और जब खाली होते तो कुछ समझ नहीं आता. तो कभी टीवी का रिमोट लगा के बैठे हो, नेटफ्लिक्स, फिर हॉटस्टार पे जाते हो, फिर मोबाइल पे देखते हो, फिर खिड़की से बाहर झांकते हो, फिर किसी और आवारा को फोन करते हो, आ जा यार खाली बैठा हूं. फिर वो भी आ जाता है तुमको, तुम उसको लेके चले जाते हो, फिर कहीं बैठ जाते हो, फिर पूल के किनारे बैठते हो, फिर इधर उधर आइटम लोगों को देखते हो, फिर घर आ जाते हो. फिर लगता है वाह जिंदगी तो एकदम मजा आ गया. You're destroying yourself. You don't understand this much. तुमको ये समझ नहीं आ रहा कि तुम बोर हो रहे हो. क्या हो रहे हो? बोर हो रहे हो. और बोर्डम अगर हो रही है तो तुम देखो ना क्या गड़बड़ कर रहे हो. ओनली वन गड़, एंगेज नहीं है तुम, एंगेजमेंट नहीं है तुम्हारे पास, बिजीनेस नहीं है, इसलिए बोरियत है. सो डू समथिंग बाय विच यू कैन बी बिजी. कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आप एंगेज हो सको. द मोमेंट यू गेट बिजी इन समथिंग यू विल नॉट फील बोर. We have been talking to each other for the last almost 1.5 hours. Are you feeling bored? Am I feeling bored? No. We are doing something. We are doing something. अब यहीं पे अगर आपको खाली बैठना होता है, कुछ देर बाद मोबाइल खोलते ना. मोबाइल तुमको दिया इसलिए कि बेटा तू बोर होता है, थोड़े दिन में तू पागल हो जाएगा, तो ले ये मोबाइल ले, बिल्कुल जल्दी पागल करूंगा मैं तेरे को, पकड़ इसको. And I tell you this, wait for 5 years more, just 5 years more, and my words will come true. You'll have mobile phone rehabilitation centers very soon in your country. Wait for 5 years more. आप पाओगे कि जैसे ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, आपके गैजेट्स और मोबाइल फोन रिहेबिलिटेशन सेंटर ओपन होंगे, एंड दे विल गेट ओपन. और वहां पे बच्चों को भेजना पड़ेगा, बिकॉज दिख रहा कि रात को 2 बजे तक भी मोबाइल में लगा, सो नहीं रहा. सुबह उठते ही सबसे पहले देखता कुछ आया क्या, तेरा कौन बैठा जो तेरे को भेजेगा. Yes, so इस तरह से आपका कौन सा कंटेंट हाई होता जा रहा है तुम्हारे अंदर. Getting it or not? अब इसको समझो. Now something very important coming to you. Ravan and Kumbhakarna are left by Vibhishan. It means Satvikta left Rajsik and Tamsik content. They got destroyed. ये खत्म हो गए. ये सात्विक कंटेंट किसके पास पहुंचा? God के पास. When Satvikta takes you to God, there are two possibilities. One, you will be merged into God. You will be merged into God, or God will bless you with whatever internal desires you have got. या तो आप भगवान में मिल जाते हो जाकर, या फिर भगवान आपको वो दे देता है जो अभी आपके भीतर पूरी नहीं हुई है. तो जब विभीषण इनके पास पहुंचे तो भगवान ने विभीषण को क्या दिया? अदरवाइज तो ट्रेडिशन ये है कि जब कोई युद्ध होता है दो राजाओं के बीच में, तो जो राज्य होता है वो किसका होता है? जीतने वाला का. जीते तो राम थे, लेकिन राम ने किसको दे दिया? विभीषण. और दूसरी तरफ एक और कैरेक्टर है हनुमान. राम ने सबको गिफ्ट दिए और हनुमान को भी देना चाहा, लेकिन हनुमान ने नहीं लिए. तो हनुमान किस में मिल गए? Are you understanding it? So Satvikta will take you to God. After that, if there is something inside you which is yet to be fulfilled, God will fulfill that. God will fulfill that. Otherwise, you will be merged into God. You will be merged into God. So when Kabira acquired God, he didn't had any desire at all. So he got merged into God. So Kabira gave a beautiful understanding of life. He said, जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि है तो मैं नहीं हूँ. He said, जब मैं था तब हरि नहीं था, और अब हरि है तो मैं हूँ ही नहीं. यानी कि एक टाइम पे कौन रहेगा? एक ही रहेगा. So now Kabira is not Kabira, he is God. Kabira is not Kabira, he is God. Right, guys? This is all about what I have told you. I want you go home, recap it once, make few notes on it, and then see what sort of changes are required by you to have in your life, because life is beautiful. But this becomes beautiful only when you live it in alignment with the laws of life. The problem with the people is they don't understand
कि जीवन विज्ञान होता है, मनुष्य विज्ञान होता है, भगवान विज्ञान होता है, हर चीज जो की जाती है विज्ञान होता है। और विज्ञान का एक नियम है, इट इज देयर, इट डजंट वर्क फॉर यू और इट डजंट वर्क अगेंस्ट यू। साइंस ना तो आपके खिलाफ काम करती है और ना ही आपके लिए काम करती है। साइंस सिर्फ काम करती है, आपको देखना है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। ईदर यू मेक साइंस वर्क फॉर यू और यू मेक साइंस वर्क अगेंस्ट यू। या तो आप विज्ञान को अपने खिलाफ कर लेते हो या अपने फेवर में करते हो, वो गुण आपके पास होगा। So make notes and see what sort of changes have I to make. Have I to make a change by which I can wake up early in the morning? For that, few things are very important. One, you need to sleep at a right time. Second, you don't have to eat too much at night, because if you eat heavy meal, it will become difficult for you to wake up. Then you have to decide, when I wake up in the morning, what is it which shall I do? Shall I read a book? What fascinates me more? Or shall I go for a running or sit in silence in front of my idol or my divinity and then worship him? What shall I do? क्योंकि अगर कुछ नहीं करना है और सिर्फ उठना है तो तुम उठ नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ चाहिए करने के लिए। If you simply wake up, then the mind will say, क्यों उठा बे, क्या करूं बता। तुम कहोगे है तो कुछ नहीं, तो चल सो जा, तो तुम सो जाओगे क्योंकि कुछ है ही नहीं। Are you understanding it or not? हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड, नेचर को समझिए, नेचर डील कैसे करता है। बोलिए एक शब्द, बोलिए प्रकृति, फिर बोलिए संस्कृति, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। देखिए, प्रकृति जंगल है, जंगल एक प्रकृति है, उसको कोई भेदभाव नहीं करती है। उसके लिए पेड़ भी अच्छा है, गुलाब भी अच्छा है, झाड़ी भी अच्छी है, घास भी अच्छी है, कांटे भी अच्छे हैं, जहर का पौधा भी अच्छा है और फल का पौधा भी अच्छा। प्रकृति डज नॉट डिफरेंशिएट एंड डू एनी काइंड ऑफ पार्शियलिटी, इट लव्स एवरीथिंग। सो फॉरेस्ट इज अ प्रकृति and garden is a sanskriti. Garden is a sanskriti because that is made by you. You decide कि यहाँ पे गुलाब की झाड़ी रहेगी, इस हिस्से में मैं लिली के फूल लगाऊंगा, बीच में हम लोग एक ग्रास का पैसेज बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग एक आम का पेड़ लगाएंगे, और उसके बीच में अगर कोई बुशेस आ गई या पेड़ कांटे आ गए, तुम क्या करोगे, उसको उखाड़ कर फेंक दोगे। तो जैसे तुम गार्डन को देखते हो कैसा लगता है, खूबसूरत। यस और नो? अब हम हैं तो प्रकृति, लेकिन हमको बनना क्या है, संस्कृति। तो उसके लिए क्या लगेगा, डिसिप्लिन, वीडिंग आउट प्रोसेस लगेगा, टाइम टू टाइम कटाई करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम मेरे को देखना पड़ेगा क्या अनवांटेड चीजें आगे उखाड़ के फेंको इसको। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, प्रकृति, यानी कि जंगल। क्या बनूंगा, जंगल। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ मी बाय मी इज नीडेड, रेगुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ लाइफ बाय मी इज नीडेड, रेगुलर seeing whether I'm implementing those laws by me is required, and you have to time and again do it, otherwise life will not improve. You are born ordinary, you will live ordinary, you will die ordinary. बीच में एक दो डायलॉग मार के तुम अपनी जिंदगी चला लोगे, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुधार नहीं होने वाला। तुम एक ऑर्डिनरी बेटे बनकर रहोगे, ऑर्डिनरी पति बनोगे, ऑर्डिनरी बाप बनोगे, और ऑर्डिनरी तुम्हारी डेथ हो जाएगी। Neither your parents will feel proud of you, nor your wife will feel happy. तुमसे ज्यादा अच्छा उसको पड़ोसी लगेगा। ये वाला ठीक था, बस माँ बाप से थोड़ी गलती हो गई। Are you understanding it? तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी साइड देखेगा कि मम्मी को ये मिला था, कोई बेटर नहीं देख सकते थे। Yes or no? So that's all for today, guys. Any question if you want to ask, you may ask. One thing I'll recommend to all as you are sitting, and next time when you come prepared with something in your mind to ask. Don't behave like students, okay? आप बड़े हो गए हैं, आप ये मत सोचिए कि आप विद्यार्थी हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को डरा देता है और उनके अंदर से पूछने की क्षमता को खत्म कर देता है, okay? और वो पूरे जीवन स्टूडेंट बन के रहते हैं दबे दबे से। That should not happen. You are coming here to work on your personality. You are coming here to be a leader. You are coming here to be more confident. You are not merely coming here to learn English. If you are simply coming here to learn English, so you are wasting your time. You are coming here to change yourself. You are coming here to have an in-depth knowledge of life. You are coming here to be more dynamic in your life. उसके लिए सबसे आवश्यक होता है पूछने की कला। और आप पूछोगे तभी जब तुम विचार करोगे, और जो व्यक्ति विचार नहीं करता है, जिसके अपने थॉट्स नहीं होते हैं, वो बर्डन होता है, किसी काम लायक नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उस व्यक्ति की जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है। बी वेयर ऑफ सच सॉर्ट ऑफ पीपल।
अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो तुम्हारी हर बात में हाँ मिला रहा है, ठीक नहीं है, छोड़ दो उसको. You should have a friend who should show disagreement to you. You should have a fellow who should say you're wrong. तुम्हारे बच्चे में ये हिम्मत होनी चाहिए तुमको बोल सके तुम गलत हो. अगर तुमको ऐसा बच्चा चाहिए कि मेरी हाँ में हाँ मिला, तो कुत्ता पाल लो, वो दो मिलाएगा तुम्हारे आगे. कुत्ते का काम है, या एक नौकर रख लो. वही कुत्ता अच्छा लगता है, वही नौकर अच्छा लगता है जो तुम्हारी बात को मानता है. यस और नो? तुम ऐसे कुत्ते को पालोगे जो तुम पे ही भौंकने लग जाए, पर वो तुम्हारा बेटा है, कुत्ता नहीं है, ना ही तुम्हारा वो नौकर है. लेट हिम आर्ग्यू विद यू. अब तुम उससे बहस करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखो. हो सकता है कभी वो गलत हो, तुमने उसको समझा दिया कि तुम गलत थे. हो सकता है तुम गलत थे, उसने तुमको समझा दिया तुम गलत थे, तो मानो उसको. यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट परफेक्ट. मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है. Tomorrow if anything happens and if my son says you are wrong and if I find I am wrong, I'll say sorry, I am wrong. What is the problem in that? I should admit it. Are you understanding it or not? But that sort of personality you will be able to develop when you will think, when you will have a lot of thoughts inside you, when you will have questions inside your mind. So in the next session when you come, listen and ask questions. Students की तरह मत बैठिए. You're not student, you're an individual. आप एक individual हैं. You're a life seeker, you're a growth seeker. You want to be leader in your life. आप एक प्रबुद्ध इंसान बनना चाहते हैं, उसके लिए पूछना बहुत आवश्यक होता है. Right guys? So let's wrap up this session. See you tomorrow. Thank you very much.